अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू दिस वीक्स वीडियो, जहां आज हम अनलॉक करेंगे कुछ टॉडलर टैंट्रम्स। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी एंड आई होप बहुत हेल्पफुल होगी यंग मदर्स के लिए जिनके बच्चे टैंट्रम्स वाली स्टेज से गुजर रहे हैं। टिपिकली जब बच्चे 2 साल की स्टेज को पहुंचते हैं तो उनमें मनमानी करने का एक नया शौक पैदा होता है, विच इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर देयर डेवलपमेंट। इट इज़ अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दे हैव टू गो थ्रू। इसलिए 2 से 4 साल की जो उम्र है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे बाद पे बाद टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, ज़िद करते हैं, अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेबल टूज, बिकॉज ये 2 साल की उम्र से शुरू होते हैं एंड पेरेंट्स स्ट्रगल विद दैम। तो आई आस्क्ड सम मदर्स ऑन माई इंस्टाग्राम टू सेंड मी सर्टन टैंट्रम सिचुएशंस कि उनके बच्चे कौन सी सिचुएशंस में ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, या एज अ पेरेंट वो कौन सी सिचुएशंस में ज़्यादा चैलेंज फील करती हैं। एंड आई एम होपिंग टू रिजॉल्व दीज फॉर यू टुडे through the guidelines of like respectful parenting, mindful parenting, positive disciplining। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक रेजोल्यूशन दूँ फॉर दीज टैंट्रम्स। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू दीज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, हम सिर्फ आज 10 क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे एंड होपफुली इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और दिस फॉर्मेट ऑफ वीडियो तो हम इसके पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 कर लेंगे if you guys want me to do more. But as of right now I'm going to answer 10 questions, and before I answer these 10 questions आप लोग मुझे कुछ एडवाइस बार बार देते हुए सुनोगे। तकरीबन तमाम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में आप मुझे इन पॉइंट्स को रेफर करते हुए देखोगे, बिकॉज दीज आर प्रीटी मच यूनिवर्सल पॉइंट्स टू रिजॉल्व एनी टैंट्रम। दीज आर वेरी मच द बेसिक्स ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड पॉजिटिव डिसिप्लिनिंग। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले आई गो ओवर दैम, ताकि और भी कोई क्वेश्चन हैं आपके तो यू कैन प्रीटी मच रिजॉल्व अ लॉट ऑफ दैम विद दीज फ्यू टिप्स, यू नो। सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा किसी भी तरह का कोई टैंट्रम थ्रो कर रहा है, अगर बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो आपने जवाब में टैंट्रम थ्रो नहीं करना। आई थिंक अ लॉट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स क्या करते हैं, मदर्स क्या करती हैं कि वो जवाब में एग्रेसिव हो जाती हैं, उनसे वो बदतमीज़ी या डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं होती। जब बच्चा ज़िद करना शुरू करता है या शाउट करना शुरू करता है तो हम उतने ही ऊंचा ऊंचा शाउट करना शुरू कर देते हैं इन रिस्पॉन्स। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्स जो नेचुरली हमारे अंदर से निकलता है एंड वी शाउट जस्ट एज लाउड, या हम उतने ही एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। यू हैव टू रिमेंबर कि जिस वक्त बच्चा एग्रेसिव हुआ हुआ है या जिस वक्त बच्चा शाउट कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, टैंट्रम थ्रो कर रहा है, इट इज़ योर जॉब एज द अडल्ट जिसको ज़्यादा कंट्रोल है अपने इमोशंस पे, टू जस्ट बी काम, टू टेक डीप ब्रेथ्स। अगर आपको गुस्सा भी आ जाता है जल्दी तो प्रैक्टिस डूइंग दिस, कि हर दफ़ा बच्चे के गुस्सा करने पे फ़ौरन से रिएक्ट मत करें, उससे सिचुएशन एग्रीवेट होती है और पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं निकल पाता बच्चे के टैंट्रम का। सो यू डोंट वांट टू रिएक्ट क्विकली टू देयर टैंट्रम। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू वांट टू कीप इन माइंड। द सेकेंड थिंग यू वांट टू कीप इन माइंड इज़ कि आपने बच्चे के साथ एम्पैथी शो करनी है हर तरह के टैंट्रम वाले मोमेंट या सिचुएशन पे। एम्पैथी का मतलब ये है कि आप बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि आप उसकी फीलिंग्स इस वक्त समझ सकते हैं। अगर बच्चे का टॉय टूट गया है और वो उस पर रो रहा है या टैंट्रम थ्रो कर रहा है, रोता रोता बस नहीं कर रहा, बदतमीज़ी कर रहा है, टांगे मार रहा है, तो लेट द चाइल्ड नो कि यू नो इट हर्ट्स। यू नो जब जब कोई टॉय, मेरे भी जब कोई चीज़, मेरा मेकअप आइटम गिर के टूट जाता है, मुझे भी बुरा लगता है। यू वॉन्ट द किड टू फील अंडरस्टूड। वी ऑल वॉन्ट टू फील अंडरस्टूड। छोटे से छोटा बच्चा एंड बड़े से बड़ा इंसान, एट द एंड ऑफ द डे ऑल वी वॉन्ट टू डू इज़ फील कि हमारी फीलिंग्स को कोई समझता है। सो वी वॉन्ट टू बी सीन, वी वॉन्ट टू बी हर्ड, वी वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड। सेम इज़ द केस विद किड्स। जब आपके बच्चे किसी वजह से अपसेट हैं और वो टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं तो बजाय इसके कि उनको ये बताया जाए कि वो एक बेतुकी बात पे रो रहे हैं, अ लॉट ऑफ द टाइम्स एज एन अडल्ट आपको लग रहा होता है कि आपका बच्चा एक बेतुकी बात पे रो रहा है। मसलन फॉर एग्जांपल आजकल ईशाल हर दफ़ा उसकी शर्ट गीली हो जाती है तो रोना शुरू कर देती है। अब गर्मियाँ हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर सूख जाएगी, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। बट इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर कि क्या फिजूल बात करी हो, विच आई समटाइम्स डू, यू ऑलवेज वॉन्ट टू टेल द किड कि येस आई गेट इट्स अनकम्फर्टेबल, मुझे पता है तुम इस पर क्या फील करी हो। सो व्हेन यू let the child know that you understand them, that's always a good start, और वो किसी भी तरह के टैंट्रम को रिजॉल्व करने के लिए एक अच्छा आइडिया है। नंबर 3, you want to be their friend and ally and not their opponent। जब भी कोई टैंट्रम या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप उसे किसी चीज़ से मना कर रहे हैं या आप उसे कुछ करने को कह रहे हैं एंड वो नहीं कर रहा, तो इंस्टेड ऑफ बींग देयर ओपोनेंट, कि आप उसकी दूसरी साइड पे खड़े हैं और उससे लड़ रहे हैं, यू वॉन्ट टू बी देयर एलाई, कि आप उनके साथ खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा आपसे एक के बाद दूसरी चॉकलेट मांगने लगा है एंड आप उस वक्त उसको नहीं देना चाहते, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, नो का मतलब नो, मैंने कह दिया है कि मैंने तुम्हें नहीं देनी तो मतलब मैंने तुम्हें नहीं देनी, दैट इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग। पहली बात।
एंड दूसरी बात ये कि ये एक पावर स्ट्रगल चल रही है वेयर यू आर बोथ ऑन अपोजिंग साइड्स एंड यू बोथ फाइटिंग फॉर पावर. वो अपनी मर्जी करना चाहता है एंड आप अपनी मर्जी उसके ऊपर थोपना चाहते हैं. लेकिन वट यू कैन डू इंस्टेड इज बी देयर फ्रेंड एंड से मुझे भी चाहिए, तुम्हारे पास है, आई डोंट हैव इट एनी मोर, मुझे भी चाहिए, तुम्हारे पास है. एंड व्हेन द किड सेज कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो यू आर लाइक डिसअपॉइंटेड कि ओह मुझे चाहिए थी, कितने मज़े की होती है, यू नो. सो यू बी देयर फ्रेंड एंड दे फील लाइक दे डोंट हैव टू फाइट विद यू ऑल द टाइम अपनी मर्जी करवाने के लिए. सो दैट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया टू बी देयर फ्रेंड एंड देयर एलाई इंस्टेड ऑफ देयर ओपोनेंट इन एनी आर्ग्यूमेंट. नंबर 4, बच्चों के साथ बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हर एज के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस और एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन करना कि वो उनसे क्या बिहेवियर एक्सपेक्टेड है और क्या बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलवेज यूज काइंड बट फर्म लैंग्वेज जहाँ आप बाउंड्री सेट करना चाहते हो. बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चे को उसकी मर्जी करने दी जाए और बच्चे को किसी चीज़ से रोका टोका ना जाए और उसको बदतमीज़ बना दिया जाए. That is not what positive parenting is all about. Positive parenting is about कि आप बच्चे पे अपनी मर्जी थोपने के बजाय, डिसरिस्पेक्टफुली उन पे अपनी मर्जी थोपने के बजाय आप उनको ट्रेन करें टूवर्ड्स एक्सेप्टेबल बिहेवियर. फॉर पॉजिटिव पेरेंटिंग यू जस्ट नीड टू रियलाइज कि ये बच्चा भी उसी तरह इंसान है जिस तरह आप इंसान हैं. एंड यू हैव टू इमेजिन कि अगर मेरे ऊपर किसी की अथॉरिटी हो, जिस तरह मेरी अथॉरिटी अपने बच्चे के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉस है या मेरा हस्बैंड है जो मेरे से थोड़ी सी अथॉरिटेटिव पोजिशन में है. लेट्स से वो मुझे किसी चीज़ से मना करता है कि तुमने अभी ये नहीं खाना, तो वो मुझे कोई रीजनिंग दिए बगैर, कुछ बताए बगैर मुझे कहे बस तुमने नहीं खाना, मैंने कह दिया इसलिए तुमने नहीं खाना, तो हाउ डिसरिस्पेक्टेड वुड यू फील? ऑफ कोर्स वी फील डिसरिस्पेक्टेड, ऑफ कोर्स वी फील वायलेटेड कि हमारी मर्जी एंड हमारी इम्पोज्ड, हम इम्पोज्ड फील करते हैं. सिमिलरली वी डोंट वांट टू इम्पोज थिंग्स ऑन आवर चिल्ड्रन, वी वांट देम टू फील रिस्पेक्टेड एंड हम उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हम उन्हें कोई चीज़ मना करें तो क्यों मना करें. सो अगर आपके बच्चे ऐसी एज पे हैं कि वो समझ सकते हैं कि अगर मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ यहाँ पे पानी पीने से, तो इसलिए कर रहा हूँ कि सोफे पे गिर जाएगा या कारपेट पे गिर जाएगा या एनीथिंग दैट यू कैन लॉजिकली एक्सप्लेन टू दैम. अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है या फिलहाल समझने के लिए रेडी नहीं है, तो देन यू वांट टू बी देयर एलाई. बट द पॉइंट इज boundaries are important. That's what I was saying. Boundaries important हैं in any relationship and same goes for child and parent relationship as well. जब हम बच्चों की boundaries set नहीं करते तो that's when they are like bouncing off the walls, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनकी limit क्या है. And because they are in the stage of exploring कि उनकी मर्जी एंड उनकी autonomy कहाँ तक चल सकती है, तो they will constantly test these boundaries and they will constantly try to go outside these boundaries. So जब हम उन boundaries को define कर देते हैं, we draw like very clear lines, this is acceptable, this is not acceptable. आप मुझे hit नहीं कर सकते, आप किसी बच्चे के साथ physical नहीं हो सकते, किसी बच्चे को physically hit punch नहीं कर सकते, spitting नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी. Like if you draw those boundaries and you repeat them in respectful ways, explaining what you want from them, why you want from them, then eventually बच्चे समझ जाते हैं. But it's important to draw these boundaries and be very clear with them. And lastly, the 5th point is for you as a parent to realize that these tantrums are a normal stage of mental development. 2 साल की उम्र तक जो बच्चा होता है वो अपने आप को और अपनी माँ को एक मिक्स्ड इमेज के तौर पे परसीव कर रहा होता है. At 2 years that image is split and the baby starts realizing कि मैं एक अलग इंसान हूँ. I am this unique individual जिसकी अपनी मर्जी हो सकती है. I have my own dislikes, I have my own likes. मेरी एक मर्जी है, मैं हाँ भी कह सकता हूँ. I have the power of saying no as well. So they start experimenting with it. They get this new ability all of a sudden. It's like जब आप सुपर हीरोज़ वाली मूवीज़ देखते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन द हीरो रियलाइजेस कि उसके पास एक सुपर पावर है एंड एट फर्स्ट दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दैट सुपर पावर. सो इसी तरीके से ये जो बच्चों को जब नो कहने की सुपर पावर मिलती है तो दे डोंट रियलाइज व्हाट्स द लिमिट, कि कब कहाँ कहना है कहाँ नहीं कहना. सो दे विल एक्सपेरिमेंट विद इट कॉन्स्टेंटली, which will lead to a lot of tantrums because they don't know how to control it yet, which is why boundaries will come in handy. So realizing that this is a very important part of mental development. It's actually such good news कि आपका बच्चा अपनी individuality के साथ experiment कर रहा है, practice कर रहा है to find out what they like, what they don't like, what they can do, what they can't do, क्योंकि it is an important aspect of their पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सो बहुत सारे माओं का ये ख्याल होता है कि एक हमारा ही बच्चा बहुत बदतमीज़ हो गया, बहुत ज़िद्दी हो गया है
and that can lead to a cycle of negative behavior after negative behavior जब आप उसको intelligently cater नहीं करते. So as a parent you need to realize that it is completely normal and that will absolutely make you more accepting of their tantrums, और वो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी when you just accept it as a normal part of their growth and you are equipped with things to manage these tantrums intelligently. So with that I'm going to start off with the questions, and क्योंकि मैंने बहुत सारा time ले लिया है on these basics, तो I'm going to try and breeze through these questions. पहला question है how to handle a child throwing a tantrum at a store when he wants to buy everything and obviously you cannot buy everything for the kid. So सबसे पहली important बात तो ये है कि you want to set clear expectations before leaving the house. आप बच्चे के साथ communicate करें, उसको engage करें इस decision making में, उसको थोड़ी सी autonomy और power दें decision making की, and tell them clearly what to expect when they go to the store. आप उनको बता सकते हो कि आज हम आपके लिए एक टॉय लेंगे या आज हम आपके लिए टॉय नहीं ले सकते. When the child is old enough, you can also give them the budget कि आज तुम 1000 रुपये का टॉय ले सकते हो, and it's your choice. तुमने छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें लेनी है या तुमने एक कोई बड़ा अच्छा मेजर आइटम लेना है. So that way you are engaging your children in decision making, you are letting them experience autonomy and उनको अपनी मर्जी करने दे रहे हो while also having a lot of control yourself. Usually this will prevent a lot of the tantrums even before they happen, but if for some reason your child is still throwing a tantrum in store, then you just don't start throwing a tantrum in response. आपने अपना calm and cool बरकरार रखना है. You are not going to get hyper in response because that is just going to aggravate the situation. Take deep breaths, stay calm, आपकी tone बिल्कुल neutral रहनी चाहिए. What you want to do is get to their level, validate their feelings, make them feel understood. Yes, it sucks कि आपको ये चीज़ अपने बजट से ज़्यादा बाहर पसंद आ गई है and आप ये नहीं ले सकते हो. Yes, it sucks कि आपको दो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं and हम आज सिर्फ एक चीज़ ले सकते हैं. And then you can also offer alternatives or compromises. For example, तुम आज कुछ ना लो and next visit पे हम तुम्हें ये ज़्यादा अच्छी वाली चीज़ ले देंगे. Or how about you get this one item and the second item we can put on your birthday wish list, something like that. But I would really want you to stick to your original decision. Offering flexibility once in a blue moon is a good thing, लेकिन generally speaking I want you to stick to your original decision because that is how boundaries are created, and आपके बच्चे की एक general expectation बन जाती है कि when my parent gives me a boundary then that boundary is set. And lastly I want you to provide positive reinforcement and acknowledgement every time your child respects their boundary. हर दफ़ा जब आपका बच्चा exhibit करता है self control when they go to the store and they behave exactly how they are expected to behave and exactly according to the boundary that you set for them and the expectation you set for them, I would like you to acknowledge it to them how well they behaved and how proud you are of them. This will definitely help them repeat the same behavior in the future. The second toddler tantrum that we have at our hands is that your toddler has decided they want to wear what they want to wear regardless of the occasion. So the first thing you can do is you can give your child the opportunity to decide between a few appropriate options. So बच्चे पे बिल्कुल अपनी मर्जी impose कर देने के बजाय या बिल्कुल उसकी बात मान लेने के बजाय a good middle ground is you can give them a few appropriate options. उस मौके की मुनासबत से आप उसको कुछ options दे दें, and this will give your child an opportunity to practice autonomy and have a sense of control कि अच्छा मैंने dress decide किया है. Secondly, if your child is old enough, I want you to communicate and explain the situation to them. A lot of the times parents do not want to communicate or do not feel like they need to communicate with their kids. वो इस काबिल नहीं समझते बच्चों को कि उनको बात समझाने की ज़रूरत है और explain करने की ज़रूरत है why we are asking you to do certain things. So all you need to do is explain to your child how there is a certain acceptable attire for certain occasions and how you're supposed to dress up appropriately according to different situations. And a lot of the times, to our surprise, kids do understand. So it's important कि आप उनके साथ communicate करें and you reason with them in a calm and respectful manner. And of course, sometimes when the occasion allows for some flexibility, for example, it's a colored day at school and बच्चा shorts भी पहन सकता है, pants भी पहन सकता है, skirt भी पहन सकता है, frock भी पहन सकता है, like they can wear whatever they want to wear. Then you can offer more flexibility and you can give them a little more control. And let's say वो persistent है that they just want to go in
for the school function in their PJs, you can maybe negotiate कि तुम shirt यही पहन लो, and you can pair it with some fancier pants if the shirt is acceptable. So you can find compromise and negotiate a little bit if the occasion allows for that. You can also give your child a little more sense of control and authority by allowing them to select their own accessories. तुम अपने जूते खुद select कर लो, तुम अपना bag खुद select कर लो, like little things like that will make them feel a little more in control. It's always also a good idea to plan ahead of time. For example, अगर आपने ईद पे बच्चे को कुछ पहनाना है तो you can always plan ahead of time. अच्छा खासा टाइम होता है, when the Eid is coming up, so you can engage them in this conversation कि ईद आ रही है, this is what I'm wearing, this is what you're wearing. Open those channels of communication and you will see a huge difference in how your children behave in different situations when you start treating them as individuals, like people. So just make them a part of the plans and hype them up for this occasion. Lastly, you obviously want to provide positive reinforcement and praise if your child is acting in flexible and accepting ways for the chosen outfit. This next question, I think बहुत सारी माओं का ये सवाल होगा, and that is regarding screen time. कि बच्चे अगर screen time की वजह से tantrum throw कर रहे हों, whether it's like screen time withdrawal, कि आप उनका screen time कम करने की कोशिश कर रहे हैं, and they're just like asking for it and throwing tantrums because of it. So how do you manage that? First thing I would recommend is a gradual reduction. एकदम 5 घंटे से, for example, उसका screen time 5 घंटे हो चुका है, उससे एकदम उसको 30 minutes पे या वो 1 घंटे पे लाने के बजाय, you want to reduce it very gradually, so it's a little more natural and a little easier on the kid. Secondly, like I've already said a couple of times, communicating with your children is important. उनको explain करना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये किस वजह से कर रहे हैं. All of this is important. So if your child is old enough to understand, या उसके age appropriate language में, try to communicate and explain to the kid why you are trying to reduce the screen time. अगले 2 points जो है ना, they are key in order to alleviate the screen time withdrawal symptoms, if you will, and that is finding healthier alternative activities for your kids and engaging in spending time with them. I feel like बहुत सारे parents इन 2 चीज़ों को मिस कर रहे होते हैं. They want to reduce the screen time, उनको screen time कम करना है, लेकिन they're not willing to put in the time and the effort themselves to engage with their kids, play with their kids actively, and find healthier alternatives and activities for them. आपके बच्चे का जो भी इंटरेस्ट है, उसकी जो हॉबीज़ हैं, लाइक्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उनके हिसाब से, whether it's like outdoor games or like board games, card games, whatever their intellectual capacity is, whatever their age is, whatever their preferences and hobbies are, based on them, find alternatives for them and spend time playing with them. I can tell you with experience, being a mother myself, कि जब आप बच्चे को sincerely offer करते हो to play with them, जब आप उनका screen time बंद करने लगते हो and you offer yourself कि मेरे साथ खेलो, they will always, between a screen and you, they will always choose you, they will always choose an opportunity to connect with you. So it's important कि आप अपना time निकालें. When you are trying to reduce their screen time, you have to sacrifice a little bit of your time in order to spend quality time with them, play with them, engage with them, and plan activities that both of you would enjoy doing together. The next question is कि बच्चा हर बात पे no कहता है, and the mother's guess is it's probably because a lot of the people in the joint family system are constantly telling him no on different things, and that's probably also causing a lot of the tantrums in the house as well. जब बच्चे बात पे बात no कहते हैं ना, तो it's typically a reflection of their desire to have a sense of control and autonomy. जैसे मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में बोला था कि जब बच्चे 2 साल की स्टेज पे आते हैं, तो this is a new super power for them, the identification that they are a unique individual and उनकी अपनी एक मर्ज़ी है and वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर या ना कर सकते हैं. So this is their desire coming through कि they want to have a little bit of control and authority in their own life. So you want to help them navigate this new desire, ये जो उनकी नई ability है, you want to help them navigate through it and experience it in healthy ways. So the first thing you can do is you can offer them choices, like छोटी चीज़ों में, again उन्होंने रोज़ाना जो कपड़े पहनने हैं उनमें उनको choices दें, उन्होंने खाना क्या है उसमें उसको choices दें, उसको कोई activity करानी है तो आप 2 activities में उसको choice, like these little tiny things, instead of just telling him खाना खाओ, instead of just telling him चलो बात के लिए चलो, like instead of giving him instruction and giving him orders, how about you start giving him a little more options, ताकि वो थोड़ा सा अपना control assert करने की जो उसकी ख्वाहिश है ना, जो desire है, वो practice कर सके and
you can still get a lot of those things done, but he can also practice a lot of control and authority as well. Second thing you want to do is you want to model positive behavior. आपको mindful होना पड़ेगा अपने words के हवाले से, अपने actions के हवाले से. हम बच्चों को कह के चीज़ें नहीं सिखा सकते. A lot of the times they learn what they see. So जो वो हमें करते हुए देखते हैं, that is what they start doing. So अगर आपका default response हर बात के जवाब में no है, तो what else do you expect from the child? Obviously the child is also going to say no हमेशा हर बात के जवाब में. You can also model positive behavior by using positive language. यानी आप no अपनी vocabulary में से avoid करें, यूज़ करना कम करें. For example, अगर आपका बच्चा सोफ़े के ऊपर छलांगे मार रहा है, तो instead of telling him कि सोफ़े के ऊपर छलांगे मत मारो, no, don't do that. You can tell him कि आओ जंपिंग रोप लेकर आओ, बाहर जाके छलांगे मारते हैं, जाके बाहर घास के ऊपर छलांगे मारते हैं. Like offer him alternatives instead of saying no. And that being said, of course, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे you need to empathize with them, and जहाँ ज़रूरी है वहाँ you need to set clear boundaries with them. Question number 5 is very interesting, and actually this will be the last question I respond to because मैंने सोचा था 10 questions को आंसर करूँगी, but वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है. So this question asks me कि बच्चा जो है वो anger या गुस्सा या jealousy express करता है towards the younger sibling. What to do about that? बच्चों का अपने छोटे sibling के लिए jealousy या anger feel करना is actually very very common, and it can stem from a number of reasons. The biggest of which is that the kids feel displaced. उनको ऐसे लगता है कि उनकी जगह किसी और ने ले लिया है, जो तवज्जो और टाइम उनको मिलता था वो अब किसी और को मिलता है. Obviously kids are a lot of work, like newborn babies are a lot of work. तो छोटे सिबलिंग को अमूमन ज़्यादा टाइम मिल रहा होता है, ज़्यादा तवज्जो मिल रही होती है, एंड दे जस्ट फील लाइक दे नाउ हैव टू स्ट्रगल to get their parents' attention. So a lot of the times it's about attention seeking as well. इस situation में I feel like the number one, the most important thing to do is validate your child's feelings. Make him feel understood. बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि उसकी फीलिंग्स और इमोशंस बिल्कुल वैलिड हैं एंड उनको वो फील करने का पूरा हक है. दैट वे दे फील अंडरस्टूड इन हर. सेकेंडली, यू हैव टू मेक श्योर यू आर स्पेंडिंग वन-on-one टाइम विद योर ओल्डर चाइल्ड. आपका ओल्डर चाइल्ड चाहे वो 8 साल का हो, 9 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, दे आर स्टिल अ चाइल्ड एंड दे डिज़र्व a little bit of your one-on-one time and attention as well, especially if they were your first child. उनको आदत है, that was their reality for a very long time, जब तक उनका छोटा sibling नहीं आया. They were your entire universe and they were like there to claim all of your time and attention and love. So now that you have another child as well, do not make the older child feel displaced. उनके साथ उनकी मर्ज़ी की activities करें, spend quality time with them. This will reassure your older child of their importance in your life, which will make them feel less insecure and less jealous of their younger sibling. I think it will also be a great idea to encourage your older child to be more involved and more responsible in taking care of the younger sibling. So उनको छोटे छोटे activities दें उनकी age के हिसाब से obviously in taking care of your younger child. For example, अगर diaper change time है, and even if you have a 4-year-old, you can tell them to go grab a diaper or go grab the wipes. Like, you know, इस तरह के छोटे छोटे कामों में उनको involve करें. This will foster a sense of responsibility and will definitely help create a bond with their younger sibling as well. इसके अलावा आपके words और आपके actions दोनों बहुत reassuring होने चाहिए for the older child that they're still very important to you. उनके meals में उनकी preference पूछें, like day की activities किस तरह आपने plan करनी है. Ask them how would they like their day to go about. Like, make them a priority sometimes so they feel reassured that they're still very important in your life. And obviously you want to draw some boundaries. उनका jealousy या anger या aggression should never lead to physically harming the younger baby. So those kinds of boundaries obviously need to be set. But other than that, it's just going to take a little bit of empathy and a little bit of one-on-one time and reassurance for your older child to feel more secure in their relationship with you. And that is it, guys. I have several more questions, but ये video already बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है. So maybe I'll do a part 2 of it. Let me know if you guys would be interested in that. Let me know if you guys found this video helpful and if you want more motherhood content from me on this channel. And yeah, that's it for today's video. Sorry for a very long one. I'm going to see you guys in my next one. Bye.